जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू एबल टू प्रूव कि भाई लिबिन का वाइटल फोर्स कितना है, वी कैन मेजर दैट, या पोटेंसी मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट मशीन पे कर सकते हैं, दिस विल बी अ पाथ ब्रेकिंग रिसर्च. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायनामिक टॉक्स. एंड आज मेरे साथ है डॉक्टर लिबिन जॉब. आई एम प्रेजेंटली इन द सिटी ऑफ कोटायम और लिबिन happens to be one of the very very old students and a good friend. So welcome Libin. And how did you come into homeopathy? So I have come to homeopathy by accidentally. Just we want admission in MBBS, then we didn't get the rank, and we just came to homeopathy by not by choice, but by chance. rank and chances. Achha. Then suddenly I heard about homeopathy teaching from different schools. Then I have heard about National Academy of Homeopathy India. So I was so eager that I have to go there and learn. Then we came there, and When did you come? In 2015, I think so. तो 2015 से लेके 2022 हो गया है and he's still in touch with, and presently he's trying to set up a practice in Kottayam. Yeah. Okay. So there I have seen different Parkinson case. First day we just came to the hospital and we saw Parkinson case. Second day we saw the Hodgkin's lymphoma case. So it was mind-boggling that in homeopathy we have such a difficult, non-treatable cases, uncurable cases treated. Exactly. And not only incurable, but in the school we explain कि हम लोग केसेस कैसे ट्रीट करते हैं. केसेस आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट केसेस को अप्रोच कैसे किया जा सकता है. व्हाई डिड वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रेमेडी से सल्फर सिलेक्ट किया, रीजन भी, तो वो भी जरा बताना जरूरी है. वेल, आज आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? So why do we need research in homeopathy? ओके. वेल, नॉर्मली बहुत लोग कहते हैं कि होम्योपैथी इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सो होम्योपैथी इज बोथ अ साइंस, एन आर्ट एंड अ फिलोसफी. तो फिलोसफिकल प्रोसेस जो है, फिलोसफी तो है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी. इट कैन नॉट बी चेंज्ड. आर्ट इज एन इवॉल्विंग थिंग एंड इट डिपेंड्स अपॉन ईच आर्टिस्ट. But the science part of homeopathy is also an evolutionary thing. It cannot be static. Hahnemann and his progeny जो है, जो top class homeopaths है, they have given enough, but never, science में there is nothing is enough. With each generation a new thought structure comes. जो आज 100 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, आज 100 साल के बाद है हमारे पास. For example, cell lines were never thinkable. आज cell lines हैं. I can test the effect of carcinosin in situ on cell lines. I can test the effect of conium in different potencies on cell lines. We can measure, जैसे दूसरे forces can be measured. We can also measure vital force. Today we have got machines. Whether it is needed or not is a separate issue. But research, yes. तो रिसर्च वही है जो सर्च हुआ है, उसको और पॉलिश कैसे किया जाए. सो इन एवरी फील्ड, एंड होम्योपैथी के अंदर भी, बट वैलिड रिसर्च होना चाहिए. ऑफ कोर्स, फुटनोट टू अफॉर्मेशन नंबर 1, हैनेमन ने बोला है कि ऑल सच थिंग्स शुड बी आउट एंड होम्योपैथ शुड ओनली फोकस ऑन द क्लिनिकल एस्पेक्ट. ये हैनेमन का बोल है, ओके, विथ ड्यू रिस्पेक्ट्स. बट हैविंग टू सस्टेन होम्योपैथी इन द प्रेजेंट सिनारियो, if homeopathy has to grow up, we need to make our concepts clear as in the language of modern medicine, in reference to context with other systems like Ayurveda, Siddha, acupuncture, acupressure and other systems. तो उसके लिए research is important with different thought structure, but उसका ये मतलब नहीं है कि research करते करते you break the basic tenets of homeopathy. यानी homeopathic philosophy को तोड़ के research नहीं हो सकता. फिलोसफी को सामने रखते हुए रिसर्च इज इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प होम्योपैथी ग्रो एंड मेक अ स्टेडफास्ट. जैसे फॉर एग्जांपल,
इफ यू एबल टू प्रूव कि भाई लिबिन का वाइटल फोर्स कितना है, वी कैन मेजर दैट, या पोटेंसी मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट मशीन पे कर सकते हैं, दिस विल बी अ पाथ ब्रेकिंग रिसर्च. इट इज नॉट समथिंग विच इवन होम्योपैथ्स विल वेलकम इट. अभी तक क्या है, एम्बिग्विटी है, सब्जेक्टिविटी है. ऑब्जेक्टिविटी आ जाए तो थिंग्स बिकम मच मोर ट्रांसपेरेंट एंड ईजी. सो आई थिंक रिसर्च हैज टू बी देयर. इट इज गोइंग एंड धीरे धीरे धीरे, बट ओनली थिंग इज, माई अपील इज, research should not leave the basic tenets of homeopathy. Individualization is a very important tenet of homeopathy, but उसको छोड़ के हम research करना, तो all these things need to be considered, but research is important in any field including homeopathy. So दोस्तों, ऐसे बहुत सारे questions आते रहेंगे, आप प्लीज देखते रहिए हमारा शो, एंड जो भी कुछ है ये वीडियो के नीचे questions पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे पूछ सकते हैं. Thank you very much.